तो चलिए शुरू करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और द आयोनाइजेशन एनर्जी वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको कि यदि किसी भी गैसियस नेचुरल गैसियस एटम को प्रोवाइड किया जाए तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इजीली और वो खुद को कन्वर्ट कर लेगा एक केटायन में। यह आयोनाइजेशन एनर्जी और यह जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक अहम हिस्सा होता है और इसलिए यह एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बन जाता है केमिस्ट्री में और द एटॉमिक फिजिक्स में, राइट। सो sum up, ionization potential, which is also called the ionization energy, is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the natural gaseous atom to form a cation, right? की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हम आयनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशंस की, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दैट रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स is always smaller than the second ionization energy, which removes the second electron from the natural gaseous atom. Energy is very much higher than that of the first and the second energy, making it difficult to lose more than 3 atoms from the gaseous 3 electrons from the natural gaseous atom. Right? Plus 4 cation we barely encounter in the atomic physics or in the atomic chemistry, right? So now come to the factors affecting ionization potential. Factors affecting the ionization potential are the ionic size, nuclear charge, shielding effect, and the electronic configuration of the atom. Larger the size, lower the energy. Lower the energy means the ionization energy is lower. For highly charged gaseous atom, ionization potential is high, on higher side. Shielding effect, it means the presence of inner electrons between the outermost electrons and the nucleus. It lowers the ionization potential, right, because it shields the attractive forces of nucleus towards the outermost loose pair of electrons, which is going to be released by the atom when we impart some energy to them. Electronic configuration, say the stable electronic configuration like the half-filled and the full-filled. Half-filled and the full-filled cells, which gives a stable configuration, have the higher ionization potential. For inert gases or for the noble gases, it is very much higher, that make them inert. They do not react. When the ionization potential is higher side, the atom or the elements are not going to react. They are less reactive, and for the atoms which have the lower ionization potential are more reactive. For example, the metals in group 1, group 2, group 3, 4, 5, 6, 14, these are the metal in the periodic table which are more reactive than the non-metal like chlorine, halogen group, carbon group, nitrogen group, right? So the periodic table is like that. When we come across a period, it increases from left to right due to increasing atomic size and increasing nuclear charge. Down the group, it decreases due to increasing atomic size and shielding effect. So क्या कह रहा है यहाँ पे, जब भी हम कभी भी एक पीरियड के अक्रॉस बाएं से दाएं के तरफ जब जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जितना रहना चाहिए वो ज्यादा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है और इसलिए उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ती है। इट मीन्स जब भी हम बाएं से दाएं की तरफ जब जाएंगे पेरियोडिक टेबल में, तो इसका जो ट्रेंड होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वो क्या होगा, वो धीरे धीरे जो है वो इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, साइज के बढ़ने से
न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम है और इसलिए वहां पे हमारा जो एनर्जी है वो कम लगानी पड़ेगी और इसलिए डाउन द ग्रुप जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता जाता है, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ionization potential. Let us see some example. Now come to the question, ionization potential, how it affect the chemical bonding. How ionization potential affect the chemical bonding? See, what is the chemical bonding? Chemical bonding reaction है, रिएक्शन मैकेनिज्म का एक अहम पार्ट है जिसमें कि दो डिफरेंट एटॉमिक एटम्स और द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, राइट, और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. So the atoms which are having lesser ionization potential, they really lose one electron, and the non-metal which do not want to give lose electrons easily, they accept that electron. For example, NaCl, that is the namak, sodium chloride. Sodium loses one electron and chlorine accept one electron and form a compound, ionic compound, that is called the sodium chloride. Similarly, calcium chloride, the calcium loses two electrons and chlorine, 2 gram atom of chlorine and the 1 gram atom of calcium, they combine to form the calcium chloride, in which the calcium loses 2 electron and calcium chlorine accept 1 electron each to form the chloride anion. So this is the way how electron affinity affects the chemical bonding. तो इस वीडियो के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के साथ में. थैंक यू.